This is GO-MMT Radio. GO-MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. Welcome to yet another episode of GO-MMT Radio. मेरा नाम है सोनू. Thank you for joining in. And of course, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, if you want to give us feedback about the show, or if you want to be part of the show, you can email us at headsatgo@go-mmt.com. आज हमारे शो पे we're going to have our favorite segment. In fact, this is my favorite segment. It's Bowl Baby Bowl. It's called Bowl Baby Bowl, जहाँ पे हम बात करते हैं हमारे गो ट्रिपर्स से and we talk about their home state, and it's honestly a beautiful experience because you get to know a little bit about their state, and these are the things that you wouldn't get to read on internet, which is why this conversation is so special. So we'll be joined by a lovely go tripper. इनका नाम है Pankaj Guleria, and he is an assistant manager analytics for the hotel supply department. So he'll be joining us. थोड़ी देर में कहीं मत जाइए, सुनते रहिए GO-MMT Radio. मेरा नाम है सोनू, and yes, Pankaj is from Himachal. So we've got lots of things coming up for you. Brand की बात on GO-MMT Radio. ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. इट इज एक्सक्लूसिव फॉर द गो ट्रिपर्स, क्योंकि ये है वंस इन अ लाइफ टाइम डील, खास आपके लिए और आपके फैमिली के लिए. यास आइलैंड विच इज इन अबू धाबी आप जा सकते हैं, और सिर्फ आप नहीं, आपको एक चांस मिल रहा है टू हॉलीडे. आई डोंट नो मैन, आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड टू से दिस. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट डाइजेस्ट इट, क्योंकि ये काफी बड़ा न्यूज है. इफ यू गो टू यास आइलैंड दुबई, यू गेट टू हॉलीडे विद नन अदर देन रणवीर सिंह. जी हाँ, सही सुना आपने. सो अभी बुक कीजिए अबू धाबी वे के, एंड यू कैन चिल विद नन अदर देन रणवीर सिंह. एंड उसके लिए कूपन कोड भी है, आप यूज कर सकते हैं फ्लाई मी टू यास. I'll spell it for you so that it's clear. FLYMETOYAS. जल्दी बुक करें, क्योंकि सेलेब के साथ वे के I think you deserve it, right? Brand की बात on GO-MMT Radio. Up next, we have a performance by Amandeep Singh, Deputy Manager, Finance and Accounts, and he's based out of Gurgaon. So, over to him. ਅਗਲਾਵਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਆਣ ਜਾਣ ਦੀ ਪਸੂੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਲ ਬਾਂਗ ਬਾਂਗ ਮੇਰਾ ਟਕਰਾਇਆ ਕਾਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀ ਚੂਰੀ ਨੂੰ Bowl Baby Bowl. Learn a language. Only on GO-MMT Radio. Head, set, go. सुन रहे हैं आप GO-MMT रेडियो. मेरा नाम है सोनू. बोल बेबी बोल में आज हमारे साथ है पंकज, एंड पंकज हैज हैड अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ. I was just speaking to him while you were enjoying the show. Pankaj is an army kid. He has almost changed like 5 schools in his 12 years of schooling, which I think is amazing, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप इतने सारे schools change करते हो, it just prepares you in a much better way for life. So of course we will talk about that, but for now let's say hi to Pankaj. Hi Pankaj, how are you doing? Hi Sonu, I'm good. And आपके लिए एक्चुअली मैंने बहुत अलग सवाल लिखे थे, but then I thought आपने इतनी मतलब variety वाली लाइफ जी है, changing cities every now and then. Yes. I want to know how is it like being a Fauji kid, yeah? So see, जैसे मेरे पापा की जब पोस्टिंग होती थी, so in every 2 years or 3 years depending on the place, हमें स्कूल चेंज करना पड़ता था, बिकॉज उनके साथ में हम जब जाते थे तो हमने स्कूल चेंज किया, न्यू फ्रेंड्स, न्यू काइंड ऑफ न्यू सिटी, देन न्यू फ्रेंड्स एंड देन न्यू लाइफस्टाइल. सो थोड़ा अडेप्ट करना पड़ता था, बट आफ्टर सेकंड और थर्ड पोस्टिंग अब आदत हो गई थी उसके बाद तो. सो अडेप्टिंग इज नॉट एन big issue for me. Then you get a little restless. अरे इस शहर में ज्यादा दिन रह लिया, अभी कहीं और जाना पड़ेगा. That's what happens, right? Exactly. And Pankaj is from Himachal, and of course we will talk about Himachal. And while did you like get a chance to stay in Himachal for some time
Pankaj? Latest example is lockdown only. So Acha. I was in only during the lockdown. Acha. Okay, Yes. so Earlier, before schooling also, my pre-nursery and my UKG is in Himachal only. So I went to the school in Himachal. तो of course the roots are there. कहीं मत जाइए, बोल बेबी बोल में हम बात कर रहे हैं पंकज के साथ. The entertainment continues on Go-MMT Radio. Hello and welcome back. This is Go-MMT Radio. मेरा नाम है सोनू और बोल बेबी बोल में I am in conversation with Pankaj Guleria. He is an assistant manager analytics with the hotel supply department and we are with him talking about Himachal क्योंकि बोल बेबी बोल में हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं. We've had lovely go trippers coming from Hyderabad and Odisha, and now we have Pankaj all the way from Himachal. So Pankaj, tell us, what are the lesser known things about Himachal? So as you all know that Himachal is a tourist destination. The places in Himachal like Shimla, Manali are the common tourist destinations which everybody goes. I think सबने visit भी किया होगा कभी. Lesser known thing about Himachal is its food. Right. So everybody doesn't know about कि हिमाचल की स्पेशलिटी क्या है. So should I tell about that? Yes, of course. What are you waiting for? मैं तो मतलब पेपर और पेन रख के खड़ी हूँ यहाँ पे. आप बताइए मुझे. Okay, so Himachali Dham is the best. It's basically like you do buffet, right? But the kind of buffet, but we all sit on the ground and the chef who made all the dham comes to it and serve us dish by dish. So Okay. it's the proper let's say 9 or 10 course meal. Oh wow. And we eat. It's a proper. It's basically it's commonly vegetarian dham, but sometimes chicken or mutton is also served in the dham. अच्छा ओके. सो ऑफ कोर्स आई मीन आई थिंक हर एक स्टेट का जो है, इनफैक्ट स्टेट में भी सिटीज की जो फूड की कल्चर होती है बहुत अलग होती है, एंड ऑफ कोर्स वी विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. बट व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग इज यू टोल्ड मी दैट यू वर इन हिमाचल ड्यूरिंग द लॉकडाउन. सो आई वांट टू नो हाउ वाज दैट लाइक, बिकॉज आई थिंक द प्लेस इटसेल्फ इज सो अनटच्ड, राइट? So I'd like to know how was your experience in Himachal during the lockdown and how did the state tackle the pandemic? This is something that I want to know. So that's happening in a little while from now. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए Go-MMT Radio. मेरा नाम है सोनू. Bol baby bol. Learn a language. Only on Go-MMT Radio. Head, set, go. सुन रहे हैं आप Go-MMT रेडियो. मेरा नाम है सोनू एंड वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद पंकज गुलेरिया. ही इज एन असिस्टेंट मैनेजर एंड टुडे ऑन बोल बेबी बोल हम इनके राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, इनके स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज हिमाचल. सो वी स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट द फूड ऑफ हिमाचल, पंकज. लेकिन टेल मी, लॉकडाउन वाज अ वेरी वियर्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? कुछ सिटीज जो बहुत ज्यादा बड़ी थी, जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, द केसेस वर राइजिंग एंड पीपल वर in massive trouble. How was the situation in Himachal and what did you feel, how did you feel when you were in that lockdown in that lovely place? So पहले 6 महीने तो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा थी गवर्नमेंट की तरफ से. So गवर्नमेंट ने हमें बोला था, जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप 6 बजे से पहले ताकि आपको घर पे जो राशन लेना वो ले सकते हैं, और उसके बाद पूरी सिटी और पूरा स्टेट लॉकडाउन में होगा एंड आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं जी. सो तो वो था. पहले 6 मंथ्स थोड़े टफ थे. उसके बाद जब जैसे जैसे रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी कम होने लग पड़ी एंड उसके बाद फिर नॉर्मल काम तो करते थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. उसके बाद वीकेंड्स पे हम घूमने भी जाते थे. सो अच्छी चीज ये थी लॉकडाउन में कि उस टाइम पे बाहर का कोई क्राउड नहीं आ सकता था हिमाचल में. हिमाचल में वो जो हम जब घूमते थे वहां पे, सो मतलब शांत होता था सब कुछ. हम जो भी डेस्टिनेशन हमें घूमनी है हम आराम से घूम सकते थे, ज्यादा कहीं भी नहीं था. Right. And of course, being with
family members is definitely a blessing in a situation like this. We'll be back. कहीं मत जाइए. बोल बेबी बोल आप सुन रहे हैं on GO-MMT Radio. मेरा नाम है सोनू. Rapid fire round. सुन रहे हैं आप GO-MMT रेडियो. मेरा नाम है सोनू एंड हम बात कर रहे हैं पंकज के साथ and Pankaj is joining us as a guest on Bol Baby Bol. We're talking about Himachal. That's the home state of Pankaj. Pankaj, are you ready for your rapid fire round? Yes. मैं जो अभी ट्यून इन कर रहे हैं उनको बताना चाहूंगी कि Pankaj has had like 5 schools while growing up because his father worked in the army. तो आज के जो सवाल हैं they are like kind of inspired by that. So let's go. Your first question. In which school did you have your first crush, Pankaj? Okay. Army School, Sagar. Acha. And in which school did you have your first crush on a teacher? Army School, Sagar. So both were the same person or what? Yes. Arey, very nice. Acha. Of all the 5 schools, which one was your least favorite school? No, none. None. You liked all. Wonderful. One thing about Himachal that is very, very special. Peace. And lastly, Peace. I want you to say something in Pahadi. Okay. Do you want to translate something? No. I actually, want you to say something and let me see if I can translate it. Let's do that. Okay. मुझे बड़ी देर हो गई. You are getting late and you want me to end the conversation right now. No. But I was right now. I was right now. Yes, you were right. Yeah. देर तो हो रही है क्योंकि शो भी हमारा अभी खत्म होने को है. So thank you so much, Pankaj, for joining us. I hope you had fun and I wish you the best. Thank you so much for giving your time. Thank you so much. And with that, it's a wrap on today's episode of GO-MMT Radio. Do let us know आपको कैसा लगा हमारा ये episode by emailing us at go-mmt headsetgo@go-mmt.com. And with that, until we meet next time, stay healthy, stay safe, and keep smiling. This is me, Sonu, signing off. Up next, we have a performance by Ishaan, Vashishta. So, over to him. चुपके बीते हैं ये पल तुमसे, उलझा जो है ये सवालों में, गलत वक्त भी है ना, टूटे जो वादे हैं ऐसे ना मेरे इरादे थे, अकेला ही चलना है अब मुझको, कब तक जानू ना, राहों पर आवारा मैं खुद का सहारा, मंजिल तक है मुझको जाना, जाने दो ना, खुद के ख्यालों में खोया रहूंगा मैं, जाने दो ना, इस दिल की तकदीर खुद ही लिखूंगा मैं, जाने भी दो ना. आँखों में तेरी देखे थे जो सपने मैंने, था ही नहीं उस दुनिया का मैं, वो दुनिया मेरी ना. To listen to your favorite Go-MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, Facebook, LinkedIn and Instagram. Visit the Go-MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel. This is Go-MMT Radio. GO-MMT Radio. Headset Go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus.